Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Friday evening edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of economics, business, and the stock markets. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं बाजार के जाने माने विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Manoj. The top stories. Key domestic indices log marginal gains. Sensex closes above 62,500 mark, while the Nifty settles above 18,500 level. UPI hits record 9 billion transactions worth 14 lakh crore rupees in May 2023. And US Congress passes the debt ceiling bill. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, सेंसेक्स 62,500 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ, निफ्टी 18,500 के स्तर को पार कर गया। देश में इस वर्ष मई महीने में यूपीआई के माध्यम से 14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 9 अरब से अधिक के लेन देन हुए और अमेरिका में कांग्रेस ने डेट सीलिंग बिल को पारित किया। घरेलू शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ। प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 62,500 के स्तर से ऊपर उठ गया, जबकि निफ्टी भी 18,500 के स्तर को पार कर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक रुख के बीच निवेशकों ने लिवाली की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 119 अंक यानी 0.2% की बढ़त लेकर 62,547 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 46 अंक यानी 0.25% की बढ़त लेकर 18,534 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों पर ध्यान दें तो वहां भी लिवाली तेज रही। विस्तारित बाजार में इनका प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर आज दिखा है। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स 0.6% लाभ के साथ बंद हुए। Well, as Manoj just mentioned, key domestic indices today ended with marginal gains in a highly volatile session. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above 62,500 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above the 18,500 level. Both indices rose amid positive cues from global share markets. The Sensex rose 119 points or 0.2% to close at 62,547. The Nifty also appreciated 46 points or 0.25% to close at 18,534. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap index both accelerated 0.6% each. In the Sensex pack, which is a pack of 30 companies, shares of 20 firms appreciated while those of 10 declined. Tata Steel was the top gainer as it climbed 1.9%, followed by Maruti and Mahindra, both of which were 1.7% up each. Sun Pharma rose 1.2%. On the other hand, Infosys declined 1.6%, Wipro fell 0.6% and TCS slipped 0.5%. In sectoral indices, 14 sectors logged gains while 6 witnessed losses. Metal sector rose 1.7% and realty was up 1.3%. Telecom sector surged 1.1%. On the other hand, oil and gas declined 0.7% and energy sector was up 0.5%. Tech sector slipped 0.4% while IT depreciated by 0.3%. The overall market breadth was positive as shares of 2,181 companies rose while that of 1,364 companies declined. A total of 130 shares, however, remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 11 पैसे मजबूत हुआ, 82 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 103.5 पर कारोबार कर रहा था। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, कल भी थोड़ा उतार चढ़ाव था, आज भी, और आखिरकार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। बाजार किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? मनोज जी, जैसा आप जानते हैं कि पिछले कई सत्रों से स्टॉक मार्केट में जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव रहा है। और यदि हम बड़े कंपनीज की बात करें, मिडल कंपनीज की बात करें, स्मॉल मीडियम कंपनीज की बात करें, तो हमने देखा है कि वहां पर काफी बाइंग रही है। और पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग भारतीय शेयर बाजारों में पिछले 2 महीने से काफी स्ट्रांग चल रही है। इस पूरे सप्ताह भी अगर हम देखें तो काफी पॉजिटिव इकोनॉमिक न्यूज थी। जैसे जब जीडीपी ग्रोथ का नंबर्स आए और एक उम्मीद से बेहतर जो आंकड़ा आया 6.1, 6.2% जीडीपी ग्रोथ का, जबकि हम करीब 5% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे फोर्थ क्वार्टर में, तो वहां भी उम्मीद से बेहतर नंबर्स हमने देखे। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि जैसे कि पूरे विश्व के शेयर बाजारों में एक पॉजिटिव माहौल है, उसमें भारतीय बाजारों में भी अच्छा एक सेंटिमेंट है। और साथ में जो इकोनॉमिक न्यूज है वो एक उम्मीद से बेहतर है भारतीय बाजारों को देखें तो। कुल मिलाकर इसलिए हम देख रहे हैं कि करीब करीब देखिए ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन हम ऑल टाइम हाई के बहुत पास हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक पॉजिटिव काफी सेंटिमेंट है। Yeah. And Puneet, as far as indices are concerned, they are, kind of close to all-time highs. And yesterday, the Sensex was close to, touching the 63,000 mark. From here on, to go on to the next level for the Sensex, say a level of, say, 65,000. And for the Nifty, maybe, 19,500. By when do you kind of see, although it's a very tough thing to guess, but from here on, what is your expectation? So absolutely, Ranga, you're right. Very difficult to predict which way the markets will head in the short term. However, what we have seen is that in the longer term, markets respond to economic fundamentals. And like I said earlier, economic fundamentals in India are extremely positive. So I'm quite confident that sooner than later, and definitely in the current year, Indian stock market should be able to, for instance, Sensex should be able to cross 65,000 and the Nifty should be able to cross 20,000 mark. And I think if you look at the 3 or 4 year kind of a time frame, a lot of experts have said that, in fact, Indian markets will definitely outperform global peers. Yeah. Puneet, let's do a kind of a mini review with you of our economy and the entire gamut of issues, especially the macroeconomic fundamentals. Inflation has come down, from threatening levels. It's fine now, below the range which RBI wants. The forex scenario is fine, almost close to $540 billion of reserves. The rupee dollar equation is very stable, the rupee being at around 82 to a dollar. The corporate numbers have been actually great. GDP is doing well. So all in all, don't you think the macroeconomic fundamentals, at least at this point in time, seem to be really rosy? So Ranga, you're right. Macroeconomic numbers for India are looking extremely good. And I think some of the issues which are bothering India, for example, inflation, like you mentioned, it has come down substantially, and the numbers for the month of May are likely to be quite close to the 4%, which is the magic number as far as inflation is concerned. We also know that the fiscal deficit for last year, government has been able to meet that because we got the final numbers this week, and the fiscal deficit target was achieved. India's tax collections in terms of gross revenue collections through the direct and indirect taxes, as well as GST, which reflects industrial activity, all these numbers are looking very good. So, and another number which a lot of people have missed actually lately, but I think which is extremely important, is that after many years, India's current account, we had a kind of a surplus
in the last month. So clearly, I think if we are able to manage our current account, our fiscal deficit, if we are able to manage our inflation, the overall macro numbers are very supportive. Now, what we need is that the GDP growth, which was an impressive 7%, more than 7% last year, I think that needs to be supported. And going forward, if we see GDP growth remain in 6 to 7%, I think that would be very good news. So while we have brought the economic headwinds, we have been able to bring down under control, we now need to see that the economic growth does not slow down. I think that is important right now. पुनीत जी, यदि हम यानी इसे भी मान लें कि जो आर्थिक यानी प्रगति है, आर्थिक जो चक्र है वह ऊपर की दिशा में चले और यहां से हम पीछे की ओर ना लौटें, ये मानते हुए हम अपने आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे। आपने कहा कि 4-5 वर्ष की अवधि लेकर चलें तो बहुत सारा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, जिस आधार पर अभी हम खड़े हैं वहां से। तो उनमें से कौन से ऐसे क्षेत्र आपको लग सकते हैं कि जहां अगले 4 से 5 वर्षों में तेज वृद्धि हम देखेंगे और अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में इनका प्रदर्शन काफी बेहतर रह सकता है? मनोज जी, देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसका एक काफी बड़ा पिलर ऑफ सपोर्ट या कह सकते हैं या ग्रोथ कह सकते हैं, वो सर्विसेज रहा है। और सर्विसेज में हम काफी ग्रो भी करते रहे हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में इंडिया ने काफी महारत हासिल करी है। लेकिन जो हमारा वीक एरिया है वो रहा है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर काफी ग्राउंड पर काफी काम करना पड़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो है इंडिया के लिए वीक रहा है ट्रेडिशनली। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ क्वार्टर से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और वहां पर हम ग्रोथ के लिए काफी एफर्ट कर रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 या 5 वर्षों में आपने देखा जैसे कि इवन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एक क्रांति रही है इंडिया में। और जहां हम लोग करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर्स के मोबाइल फोन इंपोर्ट किया करते थे, पिछले 1 साल में हमने वहां पर नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो क्लियरली जो भारत की जो बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगा, वीक एरिया रहा है, वहां पर अब जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले 4 या 5 वर्षों में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी बड़ी बदलाव देखेंगे। काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग में आ रही हैं और काफी आधुनिक तकनीक जो है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है, वो भी इंडिया में अब इंट्रोड्यूस हो रही है। और उसमें भी मैं कहूंगा डिफेंस सेक्टर में हम बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर वैसे अर्थव्यवस्था मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन पर्टिकुलरली जो सेक्टर देखने वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इलेक्ट्रॉनिक्स या डिफेंस इक्विपमेंट आप कह सकते हैं, वहां मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। Yeah. Puneet, let's talk about the, next big trigger from here on. The Q4 numbers and for the entire fiscal has been, more or less out for corporate India. Monsoons have been predicted to be near normal, 98% of the long period average. What would you say, the festive season starting, from say September, October onwards, would that be a trigger? And I'm talking about this point because in a couple of months from now, the entire country would be in an election mode, and obviously the stock markets also turn very cautious. So from here on, maybe some 5-6 months for an improvement in the stock market. So I'll tell you where the present areas of concern are for the markets and for the economy, and I hope that there will be improvement there. While we have seen the consumption in the high ticket item, so-called luxury items, cars, high-end houses, high-end consumption items, all these, and for example travel, hotels, we've seen consumption in these areas sustained. Surprisingly, unfortunately, we can say consumption in FMCGs, in low ticket items, that hasn't picked up. In fact, consumption in rural India has been a bit slow in the last couple of quarters. So what we need to see is that the consumption in rural India and consumption in urban India for low ticket items, that needs to pick up. Particularly if you ask me, FMCG needs to pick up. We've seen a slowdown in FMCG. We need to see some kind of a consumption growth there. And I think
as we go forward, as we go into the election mode, definitely there will be more consumption because traditionally we know the spending goes much higher in the election season. Everybody is spending more money. So clearly I think it is a consumption in the rural areas, semi-urban areas, which needs to sustain, which needs to go up. And I think that will be the turning point. Also, if you see the commodity prices, they have been going down a lot across the globe and also in India. So I think inflation will remain low. So that gives us enough headroom for consumption to grow. यहाँ पर पुनीत जी यानी बड़ा अच्छा कह लें कि प्रसंग आपने शुरू किया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर खपत में हम वह वृद्धि नहीं देख रहे हैं जो होनी चाहिए थी। क्या उपाय हो सकते हैं कि जो ग्रामीण भारत है जहां की आबादी अच्छी खासी है वहां की खपत को हम बढ़ा सकें? क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावी उपाय रहता है वो बिसाइड्स इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो रहता है स्पेंडिंग बाय लोकल गवर्नमेंट्स। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं जब वो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करती हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट गांव में या रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में होनी चाहिए। तो हालांकि अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रूरल एरियाज में अभी उसमें इतना पिकअप नहीं आया है। और जब वहां पर स्पेंडिंग होगी और वहां पर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी हम थोड़ा पिकअप देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट, क्योंकि हम देखिए जो फिस्कल हेडरूम था वो सरकार के लिए काफी कम हुआ पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि काफी वेलफेयर स्कीम्स आई थी और सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़कर करीब 7% ऑफ द जीडीपी पहुंच गया था। तो आप देखेंगे कि सरकार के पास बहुत हेडरूम नहीं था कि वो स्पेंडिंग और बढ़ा पाए। लेकिन मुझे लगता है जैसे फिस्कल डेफिसिट अब नंबर्स नीचे आ रहे हैं और गवर्नमेंट के पास जो स्पेंडिंग पावर है बढ़ रही है बिकॉज ऑफ हायर टैक्स कलेक्शन ऑल्सो, तो ये जो एक स्लो डाउन था रूरल एरियाज में, मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें जरूर इम्प्रूवमेंट आएगी और जो ग्रोथ है वहां बेहतर होगी। Yeah, and Puneet, before we wind up this segment of our discussion, let's touch upon the monetary policy as well. What do you feel? We have already discussed that, inflation has come down substantially and maybe, is in the comfort zone which RBI wants. Would you say that interest rates have kind of hit the ceiling now and maybe after one or two pauses, it would be a downslide from there on, maybe, in tranches of 25 to 50 basis points, the interest rates could start going downwards? So, Ranga, I really like your optimism on this. Because, of course, we had a difficult period because of high inflation last 1 year. RBI had to really accelerate interest rate hikes. And not only in India, I mean, globally we've seen interest rates have really shot up, which created its own issues, for people, for consumers, for people who have borrowed on EMIs and have to repay EMIs. Everybody has faced problems. So, yes, in India, inflation is now well under control. I think the numbers for the month of April, May, as I just earlier mentioned, should be closer to 4%, which is perfectly fine for RBI. So I think inflation is not going to be a challenge for India. RBI, of course, will wait for a little bit of time to see that inflation remains under control. They would not like to jump the gun, so to say, in case of easing monetary policy. But yes, you're right. I'm quite hopeful that by September, October, I think we should be in a zone where RBI can actually cut interest rates. That would be another big boost to consumption. Because the moment you start cutting interest rates, I think the entire equation changes. And for a country like India, interest rates are very, very important as consumption, promoting consumption is concerned. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज तेजी दिखी है। अमेरिका में ऋण सीलिंग संकट दूर हो जाने से निवेशकों में उत्साह देखा गया और जोखिम वाली परिसंपत्तियों की खरीदारी में दिलचस्पी अधिक बढ़ी। हांगकांग का हैंग सेंग 3.9% छलांग लगाकर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.3% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.2% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.8% की वृद्धि हुई। उधर सिंगापुर में सार्वजनिक अवकाश के कारण कामकाज बंद रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक वहां भी लिवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40
1.2% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डैक्स में 1.1% और लंदन के फुट्सी 100 में 0.9% की वृद्धि बनी हुई थी। Well, on to the other big story that we are tracking for you this evening. The US Congress has approved a deal to lift the country's borrowing limit days before the world's largest economy is due to default on its debt. The bipartisan measure sped through the Senate by a vote of 63 to 36, a day after it cleared the US House of Representatives. President Joe Biden has said that he will enact the measure into a law. His signature on the bill will spare the US from a catastrophic default on its $31.4 trillion debt. The country is forecast to overshoot its current debt ceiling on the 5th of June. A default would limit the government's ability to borrow more money or pay all of its bills. It would also threaten to wreak havoc overseas, affecting prices and mortgage rates in other countries. Puneet, so a big sigh of relief, not only for the US but for the entire world? Absolutely. I think if the world's largest economy and the strongest country where you have the reserve currency of the world, if it defaults, I mean, I can't even imagine what will happen to the world economy. So it's a big relief for the global economy. पुनीत जी, बहुत संक्षेप में ही, जो हमारे नए श्रोता जुड़ा करते हैं अक्सर हमारे साथ, और इन दिनों खूब चर्चा रही है इस खबर की, काफी लंबे अरसे से रही है, तो ये ऋण सीलिंग संकट क्या होता है और क्या अब दूर हो गया है, जिसको लेकर खुशी मनाई जा रही है और राहत की सांस ली जा रही है, आम बिल्कुल श्रोता के नजरिए से? देखिए, ये अमेरिका में जो, जैसे रंगा अपने न्यूज में पढ़ रहे थे जी, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर करीब $31 ट्रिलियन का लोन है, जो अब जो खर्चा करते हैं वहां भी डेफिसिट, जैसे हम हमारे बजट में डेफिसिट होता है, अमेरिका में भी बजट डेफिसिट है, यानी उनकी इनकम, सरकार की आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। उस खर्चे को मीट करने के लिए वो बोरो करते हैं बाजारों से थ्रू इशू ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और उसको खर्च करते हैं। वहां की जो पार्लियामेंट है, जिसे कांग्रेस हम कहते हैं, वो वहां पर एक लॉ है कि आप एक लिमिट से ज्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते। अब ये ऐसा कोई लॉ भारत में नहीं है। आपको हैरानी होगी कि हमने कोई इंडिया में जो फिस्कल डेफिसिट है या जो बजट डेफिसिट है, इसको पार्लियामेंट पास करती है, उसका गवर्नमेंट बोरो कर सकती है बिना किसी लिमिट के। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में गवर्नमेंट के ऊपर एक बाय लॉ एक सीलिंग है कि उससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकते, और यदि वो लिमिट हर जैसे वो रीच कंप्लीट होती है, जैसे इस बारी 5 तारीख तक गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की वो लिमिट जो थी वो क्रॉस हो जाती, तो उसके आगे गवर्नमेंट बोरो नहीं कर पाती, यानी गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा अमेरिका में नहीं होता और जो उनको इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है वो भी बंद हो जाती, तो वो डिफॉल्ट हो जाता। टेक्निकली जो उन्होंने पैसा देना है लोगों का, कर्मचारियों का या इंटरेस्ट रेट, वो सभी में डिफॉल्ट करती सरकार, और सरकार का कामकाज जो है वो ठप हो जाता, बंद हो जाता। आप जानते हैं पैसा अगर नहीं होगा तो वो कामकाज नहीं हो सकता। तो ये एक आसान शब्दों में आप कह सकते हैं ये खर्चा होता और उनके पास बोरो करने की जगह नहीं होती, और ये क्राइसिस रहा है। फॉर्चुनेटली ये सॉल्व नहीं हुई है सिचुएशन, ये सिर्फ पोस्टपोन हुई है, क्योंकि जो डेट सीलिंग अब पास हुई है वो मैक्सिमम 2 या 3 वर्षों के लिए अमेरिका का उससे काम चलेगा। उसके बाद दोबारा से ये एक बहुत बड़ा एक सवाल government के सामने होगा, US government के सामने। Yeah, Puneet, but don't you think the act which we have in our country, the FRBM Act, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, although not similar to the Debt Ceiling Act, but something close to that or something akin to this kind of an act in the US? So Ranga, first of all, FRBM Act mandates that we should bring down the fiscal deficit to a certain level, 3% at right now, but it does not put a ceiling on the borrowings. It does not put a ceiling on the borrowing. It only puts a ceiling on the budget deficit. And even that can be postponed, like we saw during pandemic. Government was able to breach that 3% mark. They were able to go up to 7% of the deficit. But that was a conscious decision. That was a conscious decision. So you can easily go beyond that limit. In America, the debt limit cannot be breached. It has to be passed by the parliament, and they have to expressly allow higher borrowing. So in a sense, in India, FRBM Act is more like a statement of intent. It is not something that is cast in stone that the government has to do this. In America, it is cast in stone. It is a law of parliament that you right. borrow beyond a point.
Well, let's move on and take a look at the American markets as well. The Nasdaq Composite Index rose 1.3%, the S&P 500 accelerated 1%, and the Dow Jones Industrial Average appreciated 0.5%. Still in the US, the United States and Taiwan on Thursday have signed a trade deal aiming to strengthen economic ties between both the countries and open Taiwan to more US exports. The announcement comes ahead of a high-level global security summit in Singapore this weekend. Taiwan's government has described the deal as the most comprehensive trade agreement signed with Washington since 1979. Meanwhile, China's foreign ministry spokesperson warned the United States earlier against signing any pact with connotations of sovereignty or of an official nature with China's Taiwan region. It said the US must not send the wrong signals to Taiwan independence forces in the name of trade. In recent years, the relationship between the US and China has become increasingly strained. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आज की एक बेहद अहम खबर। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने यानी मई में 14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 9 अरब से अधिक के लेन देन हुए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार मई 2023 में 9 अरब 41 करोड़ के यूपीआई के माध्यम से लेन देन हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि यूपीआई से इस साल जनवरी महीने में 8 अरब लेन देन हुए थे, फरवरी में 7.5, मार्च में 8 अरब 70 करोड़ और अप्रैल में 8 अरब 89 करोड़ लेन देन हुए। वित्त वर्ष 2022-23 में यूपीआई के माध्यम से 139 लाख करोड़ रुपए के कुल 38 लेन देन हुए हैं। भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली यूपीआई वर्ष 2016 में शुरू के बाद से विश्वसनीय भुगतान प्रणाली बनी हुई है और अब ये विश्व स्तर पर स्वीकार्य भुगतान प्रणाली बन गई है। पुनीत जी, आपकी टिप्पणी हम लेना चाहेंगे इस खबर पर और जो डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में इसे एक बड़ा छलांग हम माने। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये ग्लोबल लेवल की अचीवमेंट है। इनफैक्ट मुझे ग्लोबल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में मुझे लगता है यूपीआई का जो नंबर है वो शायद पहला या दूसरा होगा। 14 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस डिजिटल पेमेंट से होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि ये ऐसा सिस्टम है जो सभी जैसे आप सुनते हैं वीजा, मास्टर कार्ड, ये भी एक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स है और यूपीआई ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्जेस बहुत कम है। अभी तक ज्यादातर वो फ्री है कंज्यूमर्स के लिए, जबकि वीजा और मास्टर कार्ड में तो बहुत पैसा हमें देना पड़ता है ट्रांजैक्शंस के लिए। तो यूपीआई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे लगता है समय कम है मेरे पास उसकी तारीफ करने के लिए। जी Great achievement, I must say that. Well, let's move on and take a look at the oil scenario. In intraday trade, Brent crude was trading at $75.46 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading at $71.29 per barrel when reports last came in. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 241 रुपए बढ़कर 60,160 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। जुलाई में आपूर्ति वाली चांदी 136 रुपए मजबूती के साथ 72,730 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य मजबूत होकर $1,936.10 प्रति औंस पर था, जबकि चांदी भी मजबूती के साथ $23.99 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षेप में पुनीत जी, सोना अब किस दिशा में जाता दिख रहा वैश्विक स्थितियों को ध्यान में रखकर? मनोज जी, देखिए काफी उथल पुथल सोने में रही है और उसका सीधा ताल्लुक डॉलर इंडेक्स के साथ रहा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब नीचे था और काफी इसमें वॉलेटाइल रहा। मुझे लगता है सोने की अब कीमतें काफी स्टेबलाइज हुई हैं और आने वाले समय में हालांकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है सोने में और मजबूती आएगी और यहाँ से और ऊपर की तरफ इसका रुख रहेगा। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। And before we close, a quick look at the top stories. Key domestic indices log marginal gains. Sensex closes above 62,500 mark, while the Nifty settles above 18,500 level. UPI hits record 9 billion transactions worth 14 lakh crore rupees in May 2023, and US Congress passes the debt ceiling bill. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye and have a pleasant evening. Market Mantra.